जम्मू कश्मीर से हूँ। मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला तो मैंने देखा है कि इंटरनेशनल मीडिया और जो फॉरेन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं। जो इंटरनल मैटर्स होते हैं उस पर बहुत इंटरफेयर करते हैं। उस पर आपका क्या ओपिनियन है? पहला तो ये। दूसरा, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैंने देखे हैं काफ़ी सारे लोग जो इंडिया में रहते हैं और जम्मू कश्मीर को कहते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर और इंडिया ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, उस पर आपका क्या ओपिनियन है और आप उससे कैसे टैकल करेंगे? देखिए, जो आपका पहला प्रश्न जो है, बाहर के देश, बाहर के, अब जो भी कहें, बाहर की ताकतें, बाहर की कोई मीडिया, पॉलिटिक्स हमारे देश में इंटरफेयर करते हैं? हाँ, करते हैं। कम से कम कोशिश तो करते हैं। अब कोशिश क्यों करते? क्योंकि हमने सालों से उनको ये करने दिया। जब आपने इसको बंद किया या किसी ने कुछ टिप्पणी की और उसका आपने जवाब दिया, किसी ने कुछ कदम उठाए, आपने उसका भी जवाब दिया, तो ये आप देखेंगे ये कम होता जाएगा। इस दुनिया में जम्मू कश्मीर, उसका जो पूरा मुद्दा जो है, ये हमारा बनाया गया मुद्दा है। हम ही लोगों ने 370 को इतने साल जीवित रखा। ये हमारी कमजोरी थी। और जब कोई भी बड़ा देश कमजोर होता है तो दुनिया इसका पूरा लाभ उठाती। तो जिस दिन 2019 में जो संसद ने वो निर्णय लिया, मोदी सरकार ने वो निर्णय लिया संसद के समर्थन से, उस दिन जो है ये माने जो खिड़की जिसके थ्रू दुनिया इंटरफेयर करती है, वो खिड़की बंद हो गई। और ये पहले से होना चाहिए था। किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की सोच नहीं थी, किसी की कमिटमेंट नहीं थी। तो एक तो ये फर्क। दूसरा जो आप कहते हैं, दूसरा सवाल आपका जो था, एक तो हाँ रहते, देखिए हमारे यहाँ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट होंगे, अलगावादी लोग होंगे, कुछ लोग होंगे जो पॉलिटिकली उनकी वो सोच होगी। आप मेन स्ट्रीम को देखिए। और ये भी है कि हमें आपस में डेमोक्रेसी होती है, पर जो हम विचारधारा जो कहते हैं, ज्यादातर मैं कहूंगा खाली इस कमरे में नहीं, जो युवा पीढ़ी को देखता हूं, मुझे वो ज्यादा नेशनलिस्ट लगते हैं। मुझे लगता है कि उनमें वो ताकत है कि जो अलगावादी धाराएं जो हैं या जो लोग आतंकवाद को समर्थन करते हैं, उनका मुकाबला मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी कर सकती है। और मुझे ये भी विश्वास है कि आगे के दिन में इसमें एक बहुत बड़ा, आप देखेंगे ये जो G20 जो हुआ ना श्रीनगर में, इसको आप छोटी बात नहीं मानिए। ये एक किस्म से हमारे लिए एक टेस्ट था। तो इसमें अगर हम सफल रहे तो आगे आप देखते रहिए। ये इस सरकार की कमिटमेंट है। जब हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को नेशनल मेन स्ट्रीम में लाएंगे, अब हम पूरी तरीके से नेशनल स्ट्रीम में लाएंगे। And it is being seen as a breakthrough. He is also being criticized, but how do you India see it? Do you see it as a breakthrough, and what will be your roadmap in the future to resumption of at least diplomatic ties with Pakistan? So perhaps 4 questions. I'll hand over to you, sir. देखिए, 3 सवाल जो हैं वो पाकिस्तान पर थे, एक सवाल जो है वो चाइना पर था। तो ये 3 सवाल जो पाकिस्तान वाले सवाल जो हैं मैं एक साथ लेना चाहूँगा, ताकि बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी से दिस, एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एन SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor,
I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. So this has been our long-standing position. Nobody should have any doubt about it, and I assure you those who are in the room today had no doubt about it. I made sure of that. Regarding आपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में था. Now, you know, I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. जो आपका जो दूसरा सवाल जो था कि from what I understood that India and Pakistan should sit together. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So I think, I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. So you know, let's be clear what this is about. On your question, you know, is this a breakthrough? Look, he came here as a member, a foreign minister of an SCO member state. That is part of multilateral diplomacy. Please do not see it as anything more than that. It was not meant as anything more than that. It was not treated as anything more than that. And I think nothing that from what he said or what I heard he said deserves for this to be treated more than that. The China question. Look, my understanding of what the Chinese said, I think they used the word stable, if I'm not mistaken. I don't think that's the issue. I think the issue is that there is an abnormal position in the boundary areas, border areas, along the boundary. And we had a very frank discussion about it. It's not the first discussion. I had spoken to Foreign Minister Chingang on the sidelines of the